ये कूल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो का यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमें ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से निकालना है उसको हम सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जो आपको पेन सूटेबल लगता है उस पेन को चूज कर लीजिए। पेन को चूज करने के बाद हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे। फोटोशॉप में ओपन करने के बाद Shift+F5 दबाएंगे और इसे कंटेंट अवेयर कर देंगे। कंटेंट अवेयर करने के बाद इसे हम फाइल में सेव करेंगे कुछ इस प्रकार। सेव करने के बाद ऐसा हमारा फोटोज दिखना चाहिए और अब शूट करेंगे कुछ इस प्रकार। वीडियो शूट होने के बाद हम इसे प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस करने के बाद हम इसको एक मैच कट लगाएंगे। मैच करने के बाद हम इसे रिपल डिलीट कर देंगे क्योंकि अनवांटेड वीडियोस थी। हमारे वीडियो की फ्रेम हिली हुई थी इसलिए हम इसे मैच करेंगे। फ्रेमिंग फिक्स होने के बाद हम इसमें ऑडियो इंपोर्ट करेंगे जो हमें बैकग्राउंड में लगाना है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. ऑडियो लगाने के बाद हम इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे जिससे कि हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। कलर ग्रेडिंग के बाद इसे हम रेंडर करेंगे। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume.